होता रहता है. That's the only reason there's live blog होता है. यार चुप कर यार. Somebody is like. भाई मैसेजेस आ रहे हैं. व्योमेश, you look so smart. Also सबसे बढ़िया मैसेज ध्रुव विदोपी. I agree. I am gonna pin this comment. मेरा भाई घर वाले इतने हाइप अप हो रखे हैं ना, इतने हाइप अप हो रखे हैं ध्रुव करके. Everybody like ध्रुव this, ध्रुव that, and ध्रुव साला सो के अभी उठा है. उसने ना एपिसोड देखा ना उसको एपिसोड के बारे में कुछ पता है ना. लाइव आ रहा है अभी. मैं कह रहा हूँ जल्दी उठ, मुंह धो और लाइव आ जा यार प्लीज. मैंने उसको क्या पता है. So I might come live again with Dhruv and Arushi. Sapna I don't think will join us today because Sapna is busy partying. उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया अभी. Also I guess we are going live tomorrow with. Yeah. So guys, we can give you a spoiler. We are going live with Riya and Dhruv. Me, Arushi, Dhruv and Riya. Dhruvesh. Dhruvesh on top. अरे whoever actually देखो, Vyurushi is good. Vyurushi is best. नहीं, Vyurushi is best, ठीक है. Vyurushi is good. Vyurushi might be best, but Dhruvesh is best. मतलब भाई fuck it. Arushi is gonna be like बहन चुप. Arushi is gonna be like खत्म होते ही. ध्रुव के साथ जाके. हाँ लाइव खत्म होते ही इतनी गालियां देगी ना. बहुत ध्रुव कर रहा है ना, तो अब ध्रुव के साथ ही आइडियल मैच बन जा. तूने वैक्सीन लगवाई है? नहीं मैंने वैक्सीन लगवाई है कोई अभी तक. यार मैंने आगे मेरी आर्म इज लाइक नहीं ओह गॉड. कोई बात नहीं. You're gonna take rest. You're gonna recover soon. Hey Vyom. Vyurushi. Okay guys, keeping everything aside, talking some irrelevant shit. Do you like my new haircut? Irrelevant shit. It's very nice. अच्छा हुआ है. मैंने देखा नहीं था actually. अब मेरा फेस एक्चुअली दिखाई दे रहा है. मेरा फेस एक्चुअली दिखाई दे रहा है. Like is visible. Yeah. पहले तेरी शक्ल नहीं दिखती थी ना. Beardaholic. Somebody writing #Beardaholic. Hey, please take my name, Divya. Yes, super cool. Vyom. Sexy haircut. भाई आपके हेयर स्टाइल का क्या नाम है? Somebody is asking आपके हेयर स्टाइल का क्या नाम है? I don't know. मैंने कहा सुन भाई, हम हमेशा बाल कटवा के जाता हूँ. घर वाले कहते बाल नहीं कटवाए, तू छोटे कर दे जल्दी से. छोटे कर दे यार. लाइफ पे ट्रिबॉन चला गया था. Should I add them? हाँ ऐड करना उसको. I cannot see anybody यार. मतलब मैंने उसको टेक्स्ट करा था. सबको टेक्स्ट करता एक्चुअली. मैंने पूछने के लाइव करने का बट तू नहीं रिप्लाई किया. You are really not okay. Today's episode, oh god, guys, tomorrow's episode is going to be a best episode of the season. Best. I don't know about best or not best or क्या है, but me and Arushi are gonna go in front of Oracle, so you will have to wait to know what's the outcome. क्या Oracle क्या बोलता है. तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा. ऋषभ दीवान कौन है? Is he your friend? कौन है? ओ ऋषभ दीवान. तूने स्टोरी डाली थी ना अभी इसके साथ. ऋषभ दीवान. हाँ इसका बर्थडे है. So happy birthday ऋषभ. Happy birthday. कोई सोचो मैंने कहीं नाम पढ़ा है किसी स्टोरी में. Nice surname. ध्रुव कहाँ है? Okay. ध्रुव अभी सो के उठा है. ध्रुव will definitely join us for a live. Maybe आज, maybe कल तुम सारे लाइव जा ही रहे हैं, तो I think आज भी ज्वाइन करेगा. I hope that you definitely be an ideal match. Yeah, we will. For sure. अरे आरुषि, सस्पेंस नहीं बोलते ब्रो. ऐसे खोलो मत सस्पेंस. Take one. I don't think best because you guys are not an ideal match. I don't know, man. Thanks, guys. Okay. आज क्या कैसे हो?
सबको भेज दे रिक्वेस्ट है, बॉन को भी भेज दे, ध्रुव को भी भेज दे, सबको भेज दे, तो ज्वाइन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। This episode makes me so emotional. I know, right? This is a very emotional episode. Okay, guys, tell me कि मेरा नेट अटक रहा है या आरुषि का नेट अटक रहा है? I don't know. मेरा नहीं अटक रहा, तेरा अटक रहा है? मेरे को तो सही दिख रहा है मुझे। मेरे को तो अटकती हुई दिख रही है। हाँ। I'm gonna request Dhruv. Please, don't, please. But Dhruv won't come in. I am pretty sure about that. Trevor. Let me just say so. Trevor has a separate fan base on Clubhouse. A very separate fan base, bro. Trevor का भाई जो चाम चल रहा है ना on Clubhouse, उतना किसी का भी नहीं है. Please take my name, Dia. Hi, Dia. I'm so obsessed with my haircut. It's okay. Obsession होगा थोड़े दिन, उसके बाद खत्म हो गया. ध्रुव नहीं आया क्या दिल्ली? मुझे लगा ध्रुव भी दिल्ली आएगा अभी. ध्रुव नहीं है यार दिल्ली. Arshi birthday, यार my birthday is in 3 days. Hi, Trevor. Hi, Trevor. What do I say in this live, Dhrumesh on top? यहाँ पे एंट्री लेने का ऐसे नहीं, ऐसे इतना ढीला नहीं चलेगा ब्रो. You'll have to say enthusiasm. थोड़े तरीके से ध्रुव. You gotta respect Dhrumesh. I know. Dhrumesh on top. Oh fuck. ये क्या चल रहा है अभी? कब मुझे weird feel हो रहा है यार. ये क्लब हाउस में है क्या? ये Instagram है क्या है? चुप कर यार. मेरे को यार क्लब हाउस में तो भी ब्रो. I swear to God, Clubhouse is and Nikki. Clubhouse is too. Yeah, that's a new DP, I think. Yeah. Situation. But she needs a prior. सच्ची में Romesh, you're not. सच्ची, yeah, add Jay. I'm gonna add Jay क्योंकि भाई we are talking about Dhruv, but if we talk about कि किसने कितने bags collect करे तो Jay performed really good. Bro, Jay collected a lot of bags, bro. A lot of bags. They showed videos also ना कि दोनों ने. What's up? Hi Jay, what's up? Weird feel नहीं हो रहा है कि ये क्लब हाउस में है Instagram after so long. अरे Trevor क्लब हाउस और इंस्टा से ज्यादा वियर्ड यहाँ पे है कि व्योमेश और जय दोनों लाइव है. ठीक है. Oh God, man. ये कैसे हो गया? हमने लाइव कैसे? गलती से ज्वाइन कर लिया मैंने. अरे but today ये आफ्टर इफेक्ट्स है क्लब हाउस का गाइस. ये आफ्टर इफेक्ट्स है क्लब हाउस. But the episode was very nice. I saw the episode. Killer episode. Very nice है ना? Very nice episode. Everything aside, जय ने जो बिना टी शर्ट के परफॉर्म किया ना वो लगता. No man, that was so. मैंने notice नहीं करा जय ने. Bro, I think this was the most intense task. Like the most intense task on Ended. I feel ये finale task होना चाहिए था, पता है? Yeah, bro. This should have been exactly. This was like. This should have been the finale task. Yeah. The obstacle was. लाइव में मैं देखा यार ये व्योमेश का कोई फैन पेज तो मेरे को लाइव में नहीं है ये बोल रहा है. Oh fuck, man. Crazy episode, man. We had like a crazy dome session and then there was a challenge also. But whenever there's an episode पे जहाँ पे एक dome session और challenge भी होता है ना, there's too much to see, bro. Too much to see in that episode. बहुत ज़्यादा ही है यार. episode is only nice, I guess. सिर्फ डोम दिखाते हैं ना, वो बहुत मुझे बेकार लगता है. वो बिहार से लगता है कि जय और शिवम और निखिल बहुत बोलते हैं. वो लोग चुप बैठते हैं. जाने दे. Oh fuck, man. अरे नहीं एपिसोड देख के. You saw the episode? You watched the episode? Yeah, bro. I just saw the episode और मैं just अभी देखा Instagram open किया देखा तो व्योमेश live था. Bro, the way they showed the task, they showed like it was a roadie's task, bro. Fuck, पूरा task that. अरे भाई, this task. Bro, so the bad, music, so bad. the way they give music, मतलब fuck, like you know, अगर ये task आ गया मतलब पूरा सिलसिला ही खत्म हो जाएगा. Fuck.
I know. It was so intense, bro. Such an intense task, man. And I was like, कुछ भी हो जाए यार भाई, इसको बचाने का है. And you know, बात आती है performance पर, तो you know, we have to run, and running is like my forte. And I don't know, man. I don't know about you, but when we were approaching that obstacle course, no, I was feeling like fuck, bro, like that, like because we knew who was performing. It was Romesh, Arushi, Shivam, and Riya. But like for sure, I felt like यार किसी को तो help करना पड़ेगा यहाँ पे. Like there's so much, like, you know. It So was so while much, walking to while walking to that, I think somebody's video was there. Like I think Riya's video was there, where she said like my heart was like, you know, pumping. I had that same feeling, bro. I was like, oh fuck, it's a very intense task. To be very honest, वो जो 2:30 बजे ये लोग ने लिया ना challenge. Yeah, कड़कती bro. धूप के That was नीचे, कड़कती धूप के नीचे. worst time to take a challenge. Yeah. आई बेट कि जो लोग खड़े भी होंगे ना, उनकी भी तबीयत खराब हो रही होगी खड़े खड़े. ये लोग तो फिर भाग रहे थे, ऑब्स्टिकल्स के ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे से जा रहे थे विद अ कैरी बैग. रिपीटेडली मैंने अपने इंट्रो शॉट में वो भागने वाला शॉट दिया था, जिसके अंदर मेरे को पीछे टायर लेके भागना था. उसमें जितना इनका एक तरफ का रास्ता था ना, उतने ही भागा मैं 6 बार. एंड आई वाज डेड ब्रो. मैं लेट गया था वहां पे, मैं डेड हो चुका था मेरे इंट्रो शॉट में. मेरे को सिर्फ 6 बार भगाया. I think the hard part was this one. The hard part was the bamboos, no? The up and down bamboos. Oh yeah. Or what? Which was the harder part? No. Plank also. Bro, no. Which was the toughest? Which was the toughest part? अरे toughest part entire challenge only. I'll tell you, जो उसके 3-4 राउंड के बाद जो पैर ऐसे नम हो गए थे ना, we were not even able to walk, you know, in that sand. And especially, I'll tell you guys, मेरे को बोला गया था भागने का है. So I was like कि चल I'll remove my shoes and I'll run. Okay. And जैसे मैंने shoes निकाले, वो जो sand इतना गर्म था ना, मैं बोला नहीं भाई, मेरे को शूज फिर से पहनने में, फिर से शूज पहना, लाइक चलेगा भाई, सैंड शूज में अटक जाए चल जाएगा, मेरे को बट पैर नहीं चलने चाहिए. अरे एंड द वर्स्ट पार्ट, लाइक आई वाज बीइंग अ हेल्पर. ऐसा भी नहीं कि ये पूरा चैलेंज मेरे लिए था कि मैं होने वाला था, कि मैं जाने वाला था. वर्किंग लाइक एन हेल्पर, बट स्टिल अच्छा मजा आया. But it was Bro, I all felt like all in helper's hand. Helper's hand the major role. Yeah, the major. Fuck bro, मुझे लग रहा है honestly Trevon, एक चीज बोलेंगे कि मेरे को पता है जब हमारे उस पे जो वेस्ट वगैरह लगी थी और हमें लटका रखा था ना, तो जब सिर्फ लटकाया था ना, लोअर बैक पेन शुरू हो गया था मेरे को उसी टाइम पे. और मैंने सिर्फ आरुषि को इतना ही बोला, आरुषि तू बस पेन झेल लियो क्योंकि पेन होगा इसमें. और बस आरुषि को मैंने पूरा टाइम चैलेंज में कुछ ना कुछ बोलता रहा इसके कान में. आरुषि कहती they didn't show in the middle कि यार ये लोग कितने थके हुए थे, that they had to come and give that water bottle in the middle. Oh yeah. इसका इतना दिखा, they didn't show so much, like, you know, कि बीच में ये लोग पानी का बॉटल दे रहे हैं and all, like bro, it was so much more than that what they showed on TV, bro. अरे बहुत मुश्किल था यार. आरुषि को मैं पता कैसे बोल रहा हूँ, आरुषि कह रही है मैं बहुत थक गई. मैं भी कह रहा हूँ भाई मेरी भी हाथ डेड हो चुके हैं. हाँ, फिर आरुषि को मैं कान में बोल रहा हूँ कि सुन, मैं कभी तेरे से नहीं लड़ूंगा, जो तू बोलेगी वो करूंगा, जैसा बोलेगी वैसा करूंगा, बस अभी मत छोड़. You saw in the middle they showed one shot of Shivam. कुछ ना, I think he gave one उसने वहाँ पे भी एक शायरी दे दिया. वो fuck Shivam, like that was a crazy moment because they also had mics ना. asking हमें जस्ट आ गया. Yeah guys, surprise. डोम सेशन हो रहा है यहाँ पे भी. जय भाई. Guys, I'm gonna see you super soon. Okay, maybe in clubhouse. Definitely for sure. Okay. My dinner night. Alright, see you. Bye. Bye. Take care. Bye. See you. Arushi, I'm telling you, clubhouse is the thing you have to join. She's not joining because उसका पेपर आ रहे हैं. And I think she's doing the right thing as well. क्योंकि एक बार ज्वाइन कर दिया तो गेम खत्म भाई. It is not like खत्म. और अगर ज्वाइन भी किया the first day when everybody किया ना तो if you join also no put your notifications off. You just put your notifications off. Now am I audible now? Yeah, but yeah, I'm saying if you join also no. Your voice is put your notifications off.
हाँ दैट्स राइट. नोटिफिकेशन आती है ना तो टैप होता ही आप ज्वाइन हो जाते हो. Yeah, bro. Okay, That's and the then the worst. conversation starts. Then conversation forget. सबको पता चल जाता है कि you have entered the room. Obviously. Everybody knows. Everybody get one small green notification top like, Vyomesh Cole has entered the room. And then everybody is like, guys, he's here, bring him up and all. It's very addictive. Yeah. It's too addictive. It's worked up bro. और उसके बाद अगर आप आए हो और ट्रेवो जैसा बंदा आया है तो ट्रेवो को तो सिर्फ बोलते कि होस्ट कर भाई. You'll have to host. And ट्रेवोन गेम खिलवाना शुरू करता है भाई. बस गेम ही चलती रहती है. But Arushi People are saying don't join Arushi, will be pagal. What? Everybody. हाँ बोल. sure. No, I'm saying a lot of people are saying it's good. A lot of people are saying it's bad also. Like a lot of people. But I would like go according to my experience. Like, अभी मतलब I joined that day, remember? तो उसके like I found it थोड़ा सा ऐसे boring as well as addictive. मतलब boring डांस में सिस्टम में conversation नहीं होती. But I thought if I'd be more on it, I'll get addicted. So I deleted it. नहीं. But after my exam, if I get थोड़ा time. आए थे ना पहले दिन. We were learning. Yeah, we don't know what to do, bro. हो जाएगा. अब बस we know what to do. We have so many things to do. So we keep on talking random shit. आज मैं बता कौन सी गेम खेल रहा था? 21 जब आया जिस बंदे पे उससे एक क्वेश्चन पूछेंगे उसको आंसर देना then we'll have to eliminate him. समझ रहे हो? That's also a good game. What क्या करना है? देख हर बंदे को वो होता है 21 1 2 3 then you say 4 5 if you want then Archie can say 6 और 3 नंबर Oh, I know that game. हाँ. I know. Yeah. Oh, तो जिस पे 21 आएगा. जिस पे 21 आएगा उसको एक क्वेश्चन पूछना है. हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है and then after answering the question he'll get out. That's the game. I enjoyed after my exams get over. अरे तो एक बंदा जितना भी चाहे उतना भी नंबर बोल सकता है. मतलब 1 to 10 I can say. But Okay, then cool. Maximum 3 numbers, minimum 1. Then cool. You know, sometimes Arushi, in the night, okay, Arushi, after 11 o'clock in the night, just imagine. Daytime also we get like 100, 200 people. In the night we get 300 plus people. 300 plus people just to play Mafia. And 300 people are watching us, bro. Mafia खेलते हुए. Mafia game is so interesting, so controversial. तू 2 दिन देखेगी ना, you'll be fan of Mafia. कल हमने आशना को कहा like, oh my god, this is a lit game. But I don't think Arushi can this उससे ये इतना नहीं होता है कि like she can, if she's a Mafia से for example अगर वो Mafia बन गई, so I feel like Arushi is not that type where she can मतलब इतना लड़ सकती है और like she can lie and like defend. I have played Mafia though. अच्छा Trevon, honestly, देखो क्या लगता है मैं कैसा खेलता हूँ. मैं टारगेट तो हमेशा से ही होता आया हूँ, तो मेरे को पहले तो मैं निकाल देता हूँ. See that day when you became the Mafia, no, with I'll tell you who, with I think I made you with Ashna and Nikki, yeah. So उस दिन like I was seeing your game, but that day your game was like you were very quiet. Like एक जब मैंने तेरे को पहले बोला कि एक तुझे कुछ एक्शन करना है, कुछ बोलना है कि ओपनिंग राउंड में, तूने एक ही चीज बोला कि like guys मैं नहीं हूँ and फिर म्यूट कर दिया. So I was like अरे ये तो I was like found it weird कि most times तो कुछ ना कुछ तो बोलता है कि यार at least I feel like it's this on that one. एक दिन उस दिन तो एक दिन पहले नहीं था और मैं यूजुअली ना बोलता हूँ, but I was the second one to speak after Kevin. Yeah. So there was no point मैंने पहले ही जाके बोलूँ ये बंदा. That's why. Yeah, और केविन वैसे ही तो एक पहले चांस में बोल देता है सब कुछ, उसको जो भी बोलना है बोल देता है पहले चांस में. I think केविन तो भाई बंदे में बोल देता है, मान ले Arushi is dead, ठीक है, in the Mafia. Can like just because I think Vyomesh like Arushi and it can be this way, so I think Shivam might have portrayed Vyomesh by playing the reverse psychology, and I think it can be Shivam. If it's not Shivam, it can be one of the non-moderators, because non-moderators में ये बंदे ने अभी तक कुछ नहीं बोला. केविन ने अभी तक चांस नहीं मिला है उनको बोलने का, उनकी बारी बाद में आएगी. but almost sometimes too much 50 to 60%, no 50 to 60% he's like somewhat right, like कितना एक माफिया को तो नाम तो वो ले ही लेता है, like एक माफिया को तो नाम ले ही लेता है. केविन तू ये ले. Kevin was 50-60% right. Just look at Shivansh. उसने हमारे साथ 3 गेम खेले.
I don't know. He was not. भाई वो उसके बाद ही बोल रहा मुझे ऐड करो बोले भाई उसको ऐड मत करना ये गेम 1 मिनट में खत्म कर देगा. Yeah, I know. Wait, let me fuck I can't see if you can add Nikki now. I told her we're gonna go live. Okay. Are you Nikki is going not to here, yeah. suffer because Arish is not your idol match? I don't know, guys. You'll have to see the episode. I don't know if Nikki is not here. Nikki ने देखा उसको Simran invite आ invite गया किया live था. तो उसने कर दिया. चल मैं कर देता हूँ बट नहीं, नहीं. निकी आएगी अगर वो रेडी नहीं है तो. Hey, Arish has sunshine. Arushi, you're not getting any DMs or what? बोल के कि यार why you guys Okay. so inactive on Instagram? तुम लोग live नहीं आते Obviously, हो. I am. Like a lot of Okay. people saying. Some people are saying that अरे we अरे can't Devon, find this- you. Do you know this Himika? Himika, I can't see comments bro right now. Okay, I'm Himika gonna Bose? comment. Himika Himika Bose, underscore Bose. Yeah, I know Himika Bose very well. She's my friend. Trevon is the best mafia. She's saying. इसने मेरे साथ कभी खेला है हिमिका ने? नहीं. She's ऐसे ही बोल रहे Devon हैं is gone again. वो. ऐसे ही बोल रहे हैं वो. Obviously, I Trevon do. is the Yeah, best- people are like complaining all Trevon the is the time. best narrator for sure. सबके साथ खेल लिया, हर बंदे ने नरेट कर लिया, केविन ने कर लिया, आई डोंट नो मंग ने कर लिया, ट्रेवॉन ने कर लिया, बट एट द एंड ऑफ द डे ना एवरीवन अरे ट्रेवॉन को बुलाओ नरेट करने के लिए. मेक इट लिटिल फन यार क्योंकि जब दिन खुलता है ना कि बोले कि क्या रे यू कांट जस्ट बी लाइक अरे ये मर गया वो मर गया ये मर गया. अरे आई स्वेयर ब्रो, अगर मैं कभी नरेटर बनता हूँ ना तो आई एम फॉर श्योर गोना से ट्रेवॉन डाइड आउट ऑफ एड्स. Only the people on. I'm not gonna. Only the people on Clubhouse will know. Only the people on Clubhouse will know. You won't know. क्या Arun, you गेम won't है माफिया? Everybody on Clubhouse say hi right now. I think there'll be Someone is lots saying of hashtag team Okay, Trev. know. The people who are on Clubhouse with us या उन्होंने हमसे बात करी हमारे साथ गेम खेली है. Just drop a hi or a hand or something, any emoji. People are saying stop Clubhouse. नहीं कर सकते यार. Show. अभी आप सब देखोगे ट्रेवॉन का असली रूप. Oh God, that sounds so. Who said stop? Whoever said stop. Whoever said stop Clubhouse. I don't think you're on Clubhouse. If you were on Clubhouse, you wouldn't say stop Clubhouse. I want क्या to जिसने People are भी saying बोला है stop talking about जिसने भी कमेंट किया करके बोल रहा है कि स्टॉप क्लब हाउस. आई डोंट थिंक ही इज ऑन क्लब हाउस. अगर वो होता तो ही Yeah. वुड नॉट से स्टॉप. ये देखिए messages are here. There are like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या बोल के हाय 9. Hi. Everybody's typing hi with emojis. Hi. guys Everybody's you typing hi, wanted bro. guys you wanted us to be more active on Instagram so we like came live. Still we are going to go on Clubhouse tonight. I have a feeling बोल के भी हम लोग नहीं बोलते यार And आज रात को नहीं करना आज रात को नहीं करना. हम लोग आते ही है यार. we always end up on Clubhouse bro. Arey, But- I'm 100% sure we're gonna play Worst- Mafia at worst- and it's gonna last till 2 to 30. worst part is जब एक रूम बंद होता है ना one room closes बोल के चल यार guys I'm going and all. कोई nobody goes only. कोई ऐप बंद नहीं करता. लोग will exit the room. ऐप बंद नहीं होता है या दूसरे रूम में जाएंगे. Then I'm seeing अरे ये इस रूम में क्या रैंडम अरे रैंडमली देख बता दो इसमें ना ये इस रूम में इसमें मॉडर्न क्या गेम है? होता है. ट्रेवॉन या तेरा नेट अटक रहा है यार. ये नेट चेक करना तेरी बहुत अटक के wait I'm join back. I'll join back. बहुत ज्यादा अटक रहा है तू. I'm joining back. Wait. Like I don't care about Clubhouse. Stop this already. Summer. Yeah, Arish is like that. Arish is like that. Totally. So I like to tell you, होता पता है क्या? Usually me and Dhruv are the ones जो पागलबंदी करते हैं, बहुत पागलबंदी करते हैं in Clubhouse. So these guys don't make us the mods. हम किसी को निकाल देते, किसी को ऐड कर देते. We make it, मतलब we make this Clubhouse जो भी हम बात करते हैं ना interesting. So they don't make us mod. हम 2-3 बार बोलेंगे. If they don't make us mod, हम पता है क्या करते हैं? एक अपना नया क्लब शुरू कर देते, काउंटर क्लब. So it's too much fun, bro. Oh, Kashavya. Hi, Kashavya. Vyom, you ditched me for Dasham Okay. yesterday. Oh God. Hello, Clubhouse Vyomesh. talks. Hello, Vyomesh. I need to shuffle because we're not an idol match. They didn't show that. Like, I'll tell you afterwards. Arishi, come on Clubhouse. Okay. नहीं, हाँ, मुझे Hello.
Hello Vyomesh, are you going to shuffle because you're okay? I'll tell you I'm not- something after this Okay, live. okay. Just one thing I want to make it clear. जब हमें पता चला था कि आरुषि और मैं को कॉन्सिक्वेंस कुछ भी है जैसे है वैसे ही है, तो आई ओनली थिंग आई वाज श्योर अबाउट इज अगर मैं और आरुषि अगर एक आइडियल मैच नहीं बनते, सो आई मेड इट वेरी श्योर कि अगर हम दोनों में से किसी बंदे को घर जाना हो तो दैट शुड बी मी. जब भी हमारा ये होता ना, आरुषि वाज वेरी स्केयर्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. हमारी अनकट सीन्स में एक डायरी मेरी शक्ल देखने वाली है. हमारी अनकट सीन्स में एक लाइक हम बात कर रहे बैठे हो एंड आरुषि इज टू अफ्रेड कि भाई मेरे को नहीं जाना ऑरिकल के सामने. आई एम टू अफ्रेड लाइक आरुषि विल बी द आइडियल मैच इन दिस एंड दैट, एंड I knew Arushi was afraid and somewhat it was right to be afraid because it was too obvious कि हम सिल्वर विला में अभी, और अगर इसके बाद हमें ऑरिकल के सामने गए और हम आइडियल मैच नहीं बने तो गोल्ड से हम सिल्वर में आते, सिल्वर से हम जाते हैं सीधा टम्प घर. तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि अगर हम आइडियल मैच नहीं बनते तो वन हैज टू गो होम और बोथ हैज टू गो होम. मैंने कहा अगर वन का ऑप्शन आता है तो मैं घर जाऊंगा, आरुषि तू रुक जाइयो, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार ऑरिकल के सामने जा चुका था एंड अगर मैं आरुषि के साथ आइडियल मैच नहीं बनता तो किसी के साथ भी नहीं बनता. ऑल्सो मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी ड्यूरिंग द एपिसोड्स. आई वाज सो फक्ड अप. आरुषि नोस दैट. So Arushi, what's your take? What's your take on yeah, my so fucked up that he was like stopped to eat like basic खाना जब मैं खाता है. He was surviving on salads and liquids भी बंद हो गए थे ना तेरे almost. हाँ, मेरे को पानी बंद कर दिया, पानी नहीं पीना. हाँ, पानी नहीं पीना है ज़्यादा. And only have to eat only like beetroot salad बस. No food, nothing. Yeah. So in the last challenge also people pointed it out कि I was bloated. Where was my abs? मैं आया था, मेरे बहुत अच्छे abs थे and अगले last challenge में मेरे abs जा चुके थे. So that was because I'll add to one इसके बाद. That was because I had some problem जिसकी वजह से I was actually consulting doctor वहाँ पे. The doctor used to come see me every day and उस वजह से body में water retention की problem हो गई थी. ठीक है. So जो भी मेरे abs नहीं दिख रहे थे ये था, that was because I was ill. I had a disease and I was not well वहाँ पे. I'm gonna add Trevor. Add Dhruv is not here. not here. Shout out, Saurav. Are you an ideal match? Arushi red साड़ी में तुम बहुत cute लग रही थी. Hi Trevor, what's up? I was just I just watched the episode like half an hour ago. How did you like? And, It was nice. No, I liked the episode and then I remember I was pitching कि मुझे नहीं जाना है गोल्ड विला के सामने, गोल्ड ऑरिकल के सामने, and फिर votes हो गए थे and you all won the votes and Arushi's face was The more like पता है मैं shocked कब थी? Like I was the most Like- shocked. ये व्योमेश उस साइड से बोल रहा है कि I want to go, मुझे जाना है कि अगर आरुषि नहीं है then nobody ये हाँ, गुस्सा मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आरुषि नहीं है तो मैं जा रहा हूँ. And Trevor ने like क्यों जा रहा है? पागल है क्या? घर जा सकता है? I'll take the risk. मैं बताता हूँ. Okay, I'll tell you the back scene. I went to Trevor and I like भाई मेरे को जाने देना ऑरिकल के सामने. Trevor ने like मैं भी जीता हूँ, मैं जाऊंगा सिल्वर के सामने, तो एक बार ऑरिकल के सामने जा चुका है. तो लाइक भाई सुन, मेरे को जाना है गोल्डन के सामने, तेरे को जाना है सिल्वर के सामने, तो लेट मी गो. लाइक नहीं, आई वांट टू टेस्ट माय बॉन्ड एंड ही मेड सेंस ऑब्वियसली, क्योंकि एक बार भी नहीं गया समृद्धि का एंड ही हैज बीन विद समृद्धि. अरे उस दिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था ना वो सिल्वर का. ये तो पता नहीं था ना, ये जाने से पहले पता नहीं था ना. हाँ मतलब पता नहीं था ऑब्वियसली, बट उस दिन अरे everybody was about to vote for Trevon कि Trevon जाएगा सिल्वर के सामने, and I knew it when we were entering Dome, क्योंकि सबने बोल दिया था कि we gonna vote for Trevon, क्योंकि वो एक बार भी नहीं गया, and that made sense to me. Trevon ने देखा गोल्डन ऐसा है, कॉन्सिक्वेंस गोल्डन, Trevon ऐसे मैंने नहीं जाना. ऐसा घंटा में जाना है. जब when रवि जी said हमें किसी को पिच करना है, like yes sir मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना मुझे वो. और Trevon कह रहा है ऐसे, सर मेरे को नहीं जाना. मैं कह रहा हूँ सर मेरे को जाना है, सर मैं जाऊंगा. and देखो 15 मिनट के बाद मेरे को लगा I was laughing at like my face too. Trevon 15 मिनट के अंदर I realized मैंने उड़ता तीर ले लिया, जबरदस्ती उड़ता तीर दूर से जा रहा था.
मेरे आसपास भी नहीं था, लाइक मेरे को चाहिए। और मैं उसको वहाँ बैठी बैठी बोल रही हूँ नहीं जाना मुझे, प्लीज नहीं जाना। हमारे कह रहा अरे हम लोग हैं आइडियल मैच, तो टेंशन मत ले। So you didn't even want to go to like you didn't want to go to the Gold at all, Arushi, even if you had the option like to go to Gold Villa. The Gold Oracle? Sorry, yeah, Gold Oracle. Like, No, क्यों I like, didn't. अरे Then if not, listen to me, मैं क्या बोल रहा हूँ, if not, अगर Arushi, ऑप्शन if भी not होता ना, that episode, if not that episode, then when? Which episode you would come in? So I'll tell you what. Actually, I wanted to go. Like I wanted to know whether we're at match or not. But I don't know, like that entire dome, like उस time पे ना, when like people are pitching and Anvij is asking you wanna go or not, उससे I was like अगर नहीं हुए तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं है. फिर उस time ना all the bad things like start coming in your mind and they're like oh ऐसे भी हो जाएगा क्या हो जाएगा. and you know how I was like मैं जाऊंगा मेरे को भेजो, मैं जाऊंगा और निकल गया. and you know after seeing like पहले भी मैंने ये पागलपंती की थी सेकंड डे पे, दोबारा मैंने ये क्यों किया? इसको बोला थोड़ी देर रुक जा. But honestly speaking, मजाक साइड में रख के ना, मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था. I was pretty clear कि अगर आरुषि मेरा आइडियल मैच नहीं है तो I don't have an ideal match है, क्योंकि this is also the case कि कई बार you don't have ideal matches. Yeah. होता है. That was possible. I was like अगर आरुषि नहीं है तो कोई भी नहीं है, मैं जाके कंफर्म तो करूँ मैं नहीं है. I was too curious to know, and everybody was like कि भाई and in the villa everybody knew कि भाई व्योमेश और आरुषि आइडियल मैच है, और अगर 1% ये आइडियल मैच नहीं बनते तो व्योमेश का आइडियल मैच नहीं हो सकता और कोई. Exactly. And Who did I have? My point is like यार अभी एक तो इतनी मुश्किल से we are winning tasks and getting a chance to go for the Oracle. So I felt like whenever you get a chance and whenever you win a task, you should go, man. Like you know. क्या है? Okay, you should go. ठीक है. No, Everyone call me after this live. I want to talk to you regarding something. Okay. See. If not this episode, how would you be sure that you would win another challenge and then get another chance? But we Like, would have. अरे I was देख No, I felt like you made a right decision, bro. It was a good decision to go. अभी this time like the next time, how you have to win a silver challenge and a golden challenge, like to like go in for the Oracle again. So like that's too much. Like जब chance आया तो you should have taken it, bro. I think that was a good chance to like go in for the Oracle. अरे कई बार वो taunt भी करता है यार. You be like okay नहीं हुआ, like okay like they be like okay नहीं बन गए तो consequences like, लेकिन then he'll be like अगर बन गए तो just imagine the power, this that they say, and then you get like oh fuck yeah, क्या बन सकता है यार, we can get power. Yeah. अरे bro it was a gamble यार. Like honestly Trevon, it was a gamble and it was in my favor. मतलब मेरे साथ क्या हुआ मेरे हाथ में तीन पत्ते हैं, 2 पत्ते मैंने खोले, दोनों इक्के. अब मैं तीसरे पत्ते का वेट कर रहा हूँ कि वो भी इक्का ही निकलना चाहिए. तो देयर वाज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि तीसरा भी इक्का हो. गेटिंग माय पॉइंट? निकलता है नहीं निकलता वो कल पता चलेगा. मेरे हाथ में 2 इक्के ऑलरेडी है, सामने आरुषि है, चैलेंज जीत के आया हूँ. आई हैव अ गोल्डन ऑरेकल इन फ्रंट ऑफ मी. बस अब एक तीसरे इक्के की कमी है. 3 पत्ते से 2 इक्के निकल चुके, तीसरा पत्ता देखना है आप. People are writing, what are you eating? I'm eating chili potato. कुछ ऑर्डर किया है उसने. I love chili potato. When are you guys coming to Jammu? Oh, guys. What a guy, bro, working out and eating outside junk food. Potato isn't junk, yaar. Potato is like. क्या कर रहा है? Potato is junk. ये देख. How is potato junk? Starchy. कितना इतनी क्वांटिटी में खा रहा हूँ भाई मैं. ये क्वांटिटी है मेरे खाने की. Potato is junk. But मैं भी खाता हूँ, bro. I can't eat clean entirely. मुझे कुछ ना कुछ तो बाहर से खाना है. We all know that Ramesh is. Oh God, guys, what the hell? He's cleared that shit already. हाँ? Giraffe, wal, gadi, wadi. क्या? You know. Okay. Guys, I'll give you insight. ठीक है? सारी चीजें एक तरफ. But जब भी मैं कोई कांड करता हूँ ना, in Splitsvilla, जो कि आज से 3 महीने पहले हुआ है, आरुषि still comes to DM and she scolded me. तूने ऐसा क्यों किया? देखो पता नहीं था ऐसा करते. And she texted me recently. आरुषि texted me कि व्योमेश बस एक इतनी सी छोटी सी बात बोलोगी कि
you should think before you speak, and you should actually think how it affects everything, and ये वो करके like भाई ये बंदी बहुत गुस्से में है. नहीं नहीं गुस्से में बोला था यार, पागल है, गुस्से में नहीं बोला था मैंने. मेरे को ऐसा नहीं नहीं पागल है, I was not in गुस्सा at that time. हुआ क्या था मुझे याद भी नहीं, बन क्या होता. अरे guys, you agree with me? Let's ask people only. Do you agree with me? कभी कभी थोड़ा सा सोच के करना चाहिए काम. but how you know what they're showing? So like they जो edit पे दिखा रहे हैं, then that's completely different. So like sometimes they show it in a different way only, but like you know that we can't talk about because of that Zoom call. So let's not even go there. You know balloon वाला task, Trevon याद है? Yeah. मुझे सच्ची में लग रहा था कि like you know last time they showed क्या किया था, you know that जो dome session था last time का dome session with the Boom Bam had like a lot of support and all. तो उस episode के लिए ना for the trailer they showed you Kevin. Invite Kevin. Today I realized why Kevin. Today I realized why Kevin didn't. I told him just watch the episode. He watched it right now, just now. Yeah, even I called Yomesh and like told him ki. Okay. Now. You wanna add Kevin? Just try to add Kevin if he can come. I tried adding Kevin. He might come. अरे यार मत खा, Anyway. मेरे सामने से मन कर रहा खाने का. सारी चीजें साइड करके सारी चीजें. Wait. Tell Arushi another reason why she should join Clubhouse. The main reason. Vishnu. Guys, I love Vishnu Kaushal. If you are new, He joined, all the bro, he 4,000 joined. people, let me tell you, He I love Vishnu He Kaushal. joined our room. But- He came into our room. Like I know, one day, he just told playing me, around. and he doesn't reply to my messages. Like he used to, but sadly he stopped because he found a girlfriend. Huh? Hi Kevin. Oh. Hi, Kevin. Hi Kevin. What's up? I Doctor just says woke up, somebody. guys. What? Bro, What? do you like how I played a doctor, bud? Yeah, Good with bro. that shit. I'm telling you, Harris, we need to add Harris every day. Bro, Vyomesh, you know what happened yesterday again? You put your hand on the mic. You can hear नहीं me? we can hear him. We can hear him. Trevon, we can hear you. Oh, fuck, yeah. What a funny game, bro. मुझे इतना mute पे जाना था, लेकिन I'll hit you guys if you talk about Clubhouse once more. Kevin, do you like Arshi, why aren't you coming on Clubhouse? I have my exam, so Kevin, do you I'll like my probably join Oh after. yeah. Stay away. If you have your exam, stay away from Clubhouse. Yeah, I know. Okay. It is so addictive. Kevin, we are not going to talk about the episode abhi. We'll talk about it on Sunday. Yeah, done. अरे यार, I wanted to say something. About the episode? Yeah. About the Honestly, episode. apart from Splitsvilla, no, Clubhouse is the only But- thing but- that's really happening okay. a lot in our lives. Hey, But all only, I have to only one say thing. is everything happens for a reason. Yeah, Yeah, obviously. that was I was about to say. I'm Right, actually right. framing it in a very good manner. I'm like, Kevin मेरे से लड़ रहा है चाहे नहीं लड़ रहा है. He's still supporting me. He's still cheering up Dhruv, like for us only. I mean, obviously. Let's Hey, fuck, that's a cool fan, man. Yeah, looks fancy now. What's the time there? You're having breakfast, or? I just watched the episode. Look, very spicy. Kevin Oh, eating fuck. his. You saw yourself on the beach while the task was happening. Bro, honestly, like when we got there and I saw, so the scales have been shown, right? When I saw the scale, I had an idea. Thoda sa. Like I was like, okay, I am skinny. She is skinny. I hope Vyomesh is going up there. Because I think that's something to do with the weight. Oh my god. Just think. I was sitting up there. And That's Kevin what I'm needed saying. To hold me. That's- Kevin needed to hold me. Yeah, like, fuck. oh my god, fuck, khatam, Bro, you challenge saw khatam. Dhruv's VD for Sapna when she was sitting on top. What a guy, man. What a guy. I'm just waiting कि कब सपना वो वीडियो देखे और वो गालियां देते रुको. He's like, what he said? उसका जो lunch पे जो ice cream वो जो खाती रहती है, उसका- ये जो 3 प्लेट है आइसक्रीम खाती है, ये कहीं तो काम आई.
Oh fuck, bro. Fuck. Somebody is saying अब की बार अगर शिवम शायरी मारे तो तुम भी बोल देना पुरानी बातें भूल जा मेरा पकड़ के झूल जा. What the hell? Guys, we all should join Clubhouse. It's a different scene Acha, on Kevin, Clubhouse. everything aside, I have a very important question for you. Do you like my new haircut? Yeah, he's put his hair and stuff. I'm like here eating breakfast. अरे bro, I'm not put my hair. मैंने बाल कटवाया, मेरे बाल इससे कुछ भी नहीं होता, देख ऐसे ही रहेंगे ये. खत्म. I'm not. Oh, I'm what? not. I can भाई use ये my कट करवाया दिख नहीं रहा. I'm saying, how is it, bro? You need to appreciate me. Kevin, yeah, the filter, obviously. This is so. Booming youngster. Wait, I'm trying to find out. I asked this There's a- person like there's a 5 times, Dhrumesh- how's my there's a haircut? Dhrumesh- Shining there's a there. Dhrumesh- There's a Dhrumesh filter also. Where? There is. I can't find Dhrumesh the other. campaign. Dhrumesh FP. I have not seen that filter abhi tak. Dhrumesh FP. Kevin, why so handsome? People are writing. Kevin, like, I'm gonna be. You know what, Kevin? You shouldn't actually Isn't she just eating 24/7? You shouldn't actually declare when you're the doctor. It spoils it, I think. he would have been kicked out of the round. Mein. I was pointing at Kevin. I did all the shit I could. You know what my plan was. You know what my plan was. My plan was I'll kick Aryan first, and then I'll say, okay, Aryan is a villager. I'm sure Kevin was pointing Aryan, so let's kick out Kevin. फिर दोनों बाहर निकल जाते. And I knew Kevin was the doctor. You know, I said it on the group कि Kevin was the doctor. Yeah. That was I made him for the second time in the row. So I was like, you only be the doctor, bro. You were like a good doctor. You know, I knew it. He fucked the whole game last time because every time they killed the police officer, he saved the police officer. Then the one time they killed him, he saved himself. I was like, oh fuck, like this round is gonna go for Killing it, bro. And last time also, I was like, I have to go, so I'm gonna die. So save Harris. Or else I would have killed myself. Because I had no idea if Harris is the inspector or not. I had it down. Because first he said he was the mafia, and then he said he's the inspector. What the fuck? Arushi, Why when would your I say he's the exam get mafia? done? What? Harris was crazy, bro. He was a wild card in the game. Yeah. He came. Who's Harris? I'm his brother. Oh my god. Are you talking about Clubhouse again? Yes. I'm sorry, Arushi, we are very boring people, man. All we do is talk about all this. We have nothing to talk about. But Arush has no idea about Clubhouse, no? That's what- you should join, bro. Still? I joined before you, okay? Okay. But Shivan's like, what time, mafia? Let's go. What time is it? God. Okay, we're gonna play Mafia at 10. What time At 10, is it? Right? exact. 9:23 is here in India. 9:23. In half an hour. 30 minutes. Half an hour is cool, Kevin. Yeah. Every day, 10 o'clock. 12. Yeah. कब से कब तक खेलते हैं? We play from 10 to 2:30. Like, you put up on. Okay.